आप देख रहे हैं 420 ग्राम का एक नया नवेला एपिसोड। ये है हमारी रिकॉर्ड करने की फोर्थ ट्राई, और वाईफाई कनेक्शंस हैं, क्या क्या नहीं है आज की दुनिया में, लेकिन इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए हम आपके लिए एक नया नवेला एपिसोड लाए हैं। जयदीप बासु, सिद्धांत ऐनी और वैभव रघुनंदन के साथ मैं हूँ अर्जुन। एंड द रीजन वी गॉटन टुगेदर इज बिकॉज ऑफ लेट गाइज मैं थोड़े बबल में रह रहा हूँ। ना मैं सोशल मीडिया पे हूँ, ना मैं ज्यादा न्यूज व्यूज पढ़ता हूँ। And for all the disadvantages that it may have, if you're someone who's trying to stay connected to the world, it does have a lot of advantages. So आप लोग हैं, try it for sometimes just try it. Just get off social media, get off everything for at least 2-3 weeks, and you will embrace life in the way it is, in a very different way. But उसके disadvantage ये है कि जब आप कुछ नई खबर पढ़ते हो, you think you're the first one to read that news, and then you react like पता नहीं दुनिया ने अभी तक react क्यों नहीं किया। क्योंकि खबर यूं हुई कि 2 दिन बाद खबर निकलने के मैंने पढ़ा कि 54 स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैव बीन डी-रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो हमारा जो ये प्यारा सा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने ढिंढोरे पीटे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, हमने इसके बारे में बातचीत क्यों नहीं करी। भाई हमारा AIFF उस 54 फेडरेशंस में है, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं और क्योंकि वो लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है, AIFF इज ऑलमोस्ट राइट ऑन टॉप, राइट ऑन टॉप, कांट मिस इट। तो भाई लोगों ने कहा जनाब ये ओल्ड न्यूज है। मैंने कहा ठीक है, ओल्ड न्यूज है तो थोड़ी छानबीन करते हैं। और छानबीन करने के बाद जो भी मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, इट सीम्ड लाइक आई वाज रीडिंग अ प्रेस रिलीज। इट सीम्ड like no one was going deep into the topic, right? And that is the reason why we've come together today, because we're of course going to be speaking from AIFF's point of view. This is a football show. So before we talk AIFF and why they've got pulled into this mess, or if that's the right way to say they've been pulled into this mess, सिद्धांत जनाब पहले ये बता दो हुआ क्या है। क्योंकि सर 54 स्पोर्ट्स फेडरेशन से डी रिकॉग्नाइज होते हैं ना, काफी बड़ी न्यूज होती है ये स्पोर्ट्स के माध्यम में। नहीं, सही बात है, स्पेशली इन अ कंट्री वेयर ज्यादातर जो स्पोर्ट्स चलते हैं स्पेशली एलीट लेवल पे, वो यही NSF नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन चलाती है। और क्योंकि हमारे यहाँ एमेच्योर स्पोर्ट्स का अभी भी ज्यादातर मतलब सिस्टम है, where there are not professional leagues in most sports and things like that. So the derecognition of these sports federations means problems in the smooth functioning of operations, communication between the sports ministry, which is responsible for funding mostly, because most of these NSFs don't have any independent sources of income other than maybe छोटा मोटा अगर आपके पास कोई sponsorship हो या आप कोई टूर्नामेंट कराते हैं तो उस समय जो अगर कोई टिकट्स बेच रहे हो या ऐसे छोटा मोटा maybe not a problem for AIFF. Yeah, so we will come to the AIFF part of it in a bit, but in general what seems to have happened is that the petitioner in this particular story in the Delhi High Court is a gentleman called Rahul Mehra, who is an advocate, and he is also standing counsel for the Delhi government in criminal matters. So he's been a long time sports activist, basically fighting for transparency and proper governance of sports bodies. And the logic has always been, there's always a tussle between the Indian Olympic Association, जिनके ये सारे sports federations members हैं, and the ministry, because ministry का कहना है कि पैसे सरकार दे रही है, फंडिंग सरकार देती है, लेकिन जब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तब आप कहते हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफियर इन स्पोर्टिंग मैटर्स, राइट? सो ये लड़ाई मतलब सदियों से चली आ रही है और चलती रहेगी अगर ओवरऑल स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में ऐसे ही रहा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि जून 2 तारीख को, इस महीने की 2 तारीख को, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक सर्कुलर भेजा, saying that given the condition, कोविड पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग मिल नहीं पा रहे हैं, and therefore also sports bodies are not able to hold elections and several other issues. So they are maintaining the status quo and giving recognition to all of these 54 till the end of September of 2020, after which they would take the matter up again. This is a process that happens annually, recognizing and derecognizing. Right? Among these, there are 3 violating federations. One is the School Games Federation of India, one is the Indian Golf Union, and the third is the Rowing Federation of India. Apart from these 3, which have
separate violations because of which they are not recognized. The others on the list are just routine sort of recognition processes. Now, in the Feb order that the Delhi High Court had passed, it had said that no such process with regard to national sports federations will happen without prior intimation and okay being received from the Delhi High Court. ठीक है? तो अब ये जो जून 2 का जो MYAS का जो ऑर्डर था, ये इन्होंने कोर्ट को, अब शायद वो भूल गए हो या उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो उस ऑर्डर पे. भूल तक कोई नहीं है जनाब. या कोई मतलब नहीं, वो तो फिर स्पेक्यूलेशन हो गया. एनीवे, either ways the court held that its previous order had not been complied with, and therefore it has stayed this notification, which effectively means that all these 54 are derecognized. That's what's happened. Now I think to figure out how that will impact the All India Football Federation, we can go over to Mr. Jaideep Basu, who has a lot more information. सर आपने जूस तो निकाला है, लेकिन जूस निकालने से पहले जो हमारे भाई ने यहाँ पे एनालिसिस करी है, तो मेरी एनालिसिस ये है कि भीड़ लगी हुई है इंडिया गेट पे, पुलिस आई है डंडे मारने, आप वहां पे जी इंडिया गेट की फोटो खींच रहे हो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, लेकिन क्योंकि आप भीड़ भाड़ में हो तो आपके भी डंडे पड़ गए. तो क्या ये है मेरी, इज दिस एनालिसिस करेक्ट फॉर व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक्चुअली 4 साल पहले जब डंडा पड़ना चाहिए था तब पड़े नहीं थे. दे समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप अनहर्ट. तो वो डंडा आज पड़ गया दूसरी तरफ से कि जबकि इनका कोई दोषी नहीं है. दे आर नॉट एट फॉल्ट एट ऑल. In 2016, AIFF election was in gross violation of the sports code. There is no doubt about it. आपको मतलब स्पोर्ट्स कोड में सीधे बोला गया है कि कोई अगर प्रेसिडेंट या ट्रेजरर के लिए कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको 5 मेंबर को, एक मेंबर को प्रपोज करना पड़ेगा, एक मेंबर्स को सेकंड करना पड़ेगा. और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के भाई साहब ने भाई लोग ने उनको बना दिया था कि 10 मेंबर्स चाहिए, 5 को प्रपोज करना पड़ेगा, 5 को सेकंड करना पड़ेगा. टोटल उनके मेंबर्स है 200 34. उसमें अगर if one person get 5 proposer and 5 seconder, I don't think there will be another to fight. It was gross violation of the sports code and gave a lame excuse. The AIFF at that time gave a lame excuse. The AIFF General Secretary went on court saying that we have copied it from FIFA constitution. And dear sir, how many members FIFA has? 210. नो सर, बट आपने कोर्ट में जाकर बोल दिया, पर कोर्ट ने आपकी बात मान भी ली. कोर्ट माना नहीं है. अब राहुल मेहरा वही केस किया था, वो भी अभी भी चल रहा है. But that AIFF is at fault was visible when 2 years later they corrected their own constitution and made it according to sports code. It was wrong, क्योंकि स्पोर्ट्स कोड में जो लिखा हुआ है आपको मानना पड़ेगा. क्योंकि स्पोर्ट्स कोड में क्या लिखा है सर? इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन इज अप नेक्स्ट ईयर अगेन, मार्च में इलेक्शन होना है. प्रेसिडेंट कोड में 2010 में आपने जो स्पोर्ट्स कोड AIFF साइंड, व्हिच सेट कि कोई भी प्रेसिडेंट या ट्रेजरर होना, प्रिंसिपल ऑफिस बेयरर्स बनना चाहते हैं, he has to bring 1 proposer and 1 seconder. So and if I'm not wrong, Jaideep sir, if I'm not wrong, AIFF was among the first NSFs to very loudly say that everything that they are doing is in line with the sports code. Yes, they did it, and they were not wrong also. They were doing it, and sports ministry was very happy with it. And sports ministry is still very happy with AIFF. My information was they consider one of the AIFF one of the best federations in the country. They think, but this was a violation. लेकिन आज का जो मामला हुआ है, इसमें AIFF का कोई they have no fault of their own. Only thing they are in trouble at the moment to some extent. How will it impact them, sir? If say I am saying कि चलो ये overturn नहीं होता, I'm just saying let's live in present day scenario where you've been derecognized. अगर आप derecognize कर दिए गए हो, then whatever you're getting from the sports ministry, what all is it impacting and how much is it impacting? कि ओवरटर्न तो होना ही है, क्योंकि मिनिस्ट्री इज गोइंग फॉर एन SLP स्पेशल लीव पिटीशन टू सुप्रीम कोर्ट. ये ओवरटर्न होना ही है. 50-55 फेडरेशन को आप ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं कि खेल ही बंद हो जाएगा. फिर
ऐसा तो नहीं है. बट अगर नहीं होता है, as you said it, hypothetically, if it doesn't, if it gets longer, what I mean to say, Yeah. if the period of the recognition gets longer and longer, so federation will be in a spot of bother. All federations. I'm not talking about only football. All federations will suffer in the same manner. AFF will suffer. नहीं, They इन cannot पर्टिकुलर AIFF का बताओ सर आप कि क्या क्या AFF, आप इसको AFF ही लगा लीजिए. They can write a letter to federation, to ministry, but ministry cannot write a letter to them. because Ministry you're will not derecognize. Ministry will not reply to them. Officially. They might officially. They might at the most pick up the phone and talk to them. कि ऐसे कर लो. ACTC जो होता है, जो annual training calendar जो होता है, Annual calendar for training and competition. competition annual जो calendar for training and competition, okay. competition जो होता है, उसमें आपको सारे फेडरेशंस को इंक्लूडिंग AFF दे गेट देयर मनी फॉर जूनियर्स, सीनियर्स, वुमेन, मेन, सबके लिए जितने नेशनल चैंपियनशिप प्रिपरेशंस, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, फॉर गोइंग देयर, फॉर होटल, फॉर कैंप्स, फॉर एवरीथिंग. तो अब तो वो पैसे भी नहीं मिलेगा. AFF last year got all put together around 40 crore. I think it was an increase also. There was an increase in the amount they were given last year in the budget. From the previous years before that. Yes. But I also believe that this year that amount may have come down simply because NSFs across the board in the sports budget for this year, NSFs का allocation was decreased by around 55 crores. नहीं, इस बार फुटबॉल के लिए क्या हुआ, इस बार फुटबॉल के पास इंटरनेशनल मीट्स भी है काफी. तो 23 करोड़ था लास्ट ईयर, दे इंक्रीज्ड इट टू 30. एक्चुअली लास्ट ईयर दे गॉट 40 because it included the Khelo India projects also. Yes. So they were also. एक चीज पूछना था कि I'm being a little FSDL का एक आपको पैसा आता है, आपने साइन किया हुआ है, राइट? तो स्पॉन्सरशिप मनी. ना उसे FSDL 10 रुपए दे रहा है, तो उस 10 रुपए के बाद कितना आपका पैसा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आता है कि आप जोड़ के आप एक कैंप करते हैं या आप सीनियर टीम चलाते हैं या आप जो भी करते हैं? Is there a breakup? Would you have any idea about it? No, what I know is that all camps, preparatory camps, everything is taken care by the. So उसमें FSDL का कोई पैसा नहीं है. देखिए, total annual budget of AFF is around, I think, 108 crores or 105 crores, something like that, in between. And around 40 crore of that comes from the ministry. Oh, okay. That's big money, sir. It's not cash. It's cash in kind. What do you mean by kind? कि आपको हमने फैसिलिटी दे दी, हमने आपको आपके जो नेशनल टीम दुबई जा रहा है एशिया कप खेलने के लिए, उसके पहले लंबा कैंप जो आप 20 दिन का, 1 महीना का कर रहा है, एवरीथिंग इज पेड बाय मिनिस्ट्री. उसके बाद आप कह रहे हो कि आई विल प्ले मैच अगेंस्ट जापान in Tokyo, 1 match against Oman at Muscat, and 1 match against Qatar at Doha. These are not 3 preparatory matches. So government will pick up the bills for everything. Because it's part of your preparation for the Asian Championship. तो आगे हमारा 2 मेजर थिंग है. एक है वुमेन्स टीम, वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप वी आर होल्डिंग. उनके कैंप चल रहा था, आपका कैंप गोवा में चल रहा था. वो कैंप तो चलो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बच्चों को घर भेज दिया गया था, जो वैभव हैज रिटन ए हार्ड हिटिंग स्टोरी ऑन इट आल्सो. सो और आपके पास क्योंकि अक्टूबर 8 को आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का फर्स्ट द ब्रेक के बाद मैच है, कैंप लगेगा, उसकी लंबा कैंप का भी, उसका भी. तो लेकिन इसमें ये होगा जो पहले भी हो चुका है, जो पहले आपका क्या नाम है जिम्नास्टिक के साथ हुआ है, आर्चरी के साथ हुआ है, सब स्पोर्ट्स के साथ, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स के, बॉक्सिंग के साथ हुआ है. द गवर्नमेंट वर्बली विल से, which the government cannot say to the court that we have said it, but government verbally will say कि आप इसको खर्चा निकाल लो, कहीं इधर उधर से निकाल लो, कुछ करके जब आएगा हम reimburse कर देंगे. Government will reimburse at the end of the day. So what is the timeline? So since you've been following this thing and since we're all assuming कि ये overturn होने ही वाला है और overturn नहीं भी होगा तब भी आपको मतलब you'll figure out a way of how to get funding from the government. What is the timeline you're looking at? So as of now, like there's no definitive timeline for this, but also like one thing that has to be noted is that which Dr. Batra, the president of the IOA, has also come out and said is that this situation where the High Court is asking
the IOA as well as the sports ministry to come to them for any sort of decision making when it comes to NSFs is in direct conflict with the Olympic Charter, the IOC's Olympic Charter. So which is also a huge problem because 2012 में भी यही हुआ था. IOA के इलेक्शंस हुए थे तब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि ये इलेक्शंस whatever they रद्द हो जाएंगे, इसको ढंग से किया जाएगा. And then the IOC had banned Indian Olympic Association. In the Winter Games, India had competed under the Olympic flag. So there is this problem also, which like is perhaps the way out from this situation for a huge number of NSFs, which is that asking the High Court or asking the court of a country to be involved in an Olympic association, in the decision making of an Olympic association, is in direct conflict with the Olympic Charter, which makes it a problem. ये उस समय भी जो petition file हुआ था, by the way, that was also Rahul Mehra had only filed it, and he was involved in it at that point of time only. I would like to say a few things in this regard. You are right. In what happened in that 2012 election you were talking about, where IOA was banned. That time IOC time and again told IOA not to go ahead with the election. Yes. And IOA went ahead with the election. I was personally present in that election. Second thing, and now coming back to today's problem, IOA and ministry cannot wash up their hands like that. That IOC charter will be again, as per IOC charter, you cannot interfere. Tell me one thing, which Rahul Mehra has raised in the High Court, that why there is so much of discrimination. When ministry has derecognized the Gymnastic Federation of India, why? Because its secretary Santa Kumar or Sri Kumar, whatever his name is, he has been elected in violation of the sports code. Okay, absolutely. Then why did ministry give recognition to Hockey India, whose president Mustaq became president in violation of this sports code? Why Rowing Federation has got away with things, and Fencing Federation for the same violation has been derecognized by the IOA. See, both now IOA also in last 2 years we are watching complete restlessness in IOA. Every federation there is problem with IOA. Fencing has problem, rowing has problem. It is like two groups. One group belong to one gentleman, the other group belong to another gentleman, and a third group in which AFF is also there, which are a non-aligned group. They have no way to go. जैसे कि आप अगर वेटलिफ्टिंग उठा लो, हमको मालूम है कि वेटलिफ्टिंग किसके साथ है. रोइंग उठा लो, रोइंग मालूम है किसके साथ है. लेकिन फुटबॉल जैसे फुटबॉल किसी के साथ है. This is actually also a major point of conversation for IOA president will have to now address to this problem and tell everybody why there is so much problem. What is the reason behind it? It's a good thing, sir. Just because होता क्या है ये जैसे 2018 विंटर ओलंपिक्स की वैभव बात कर रहा था, जहाँ पे ओलंपिक्स के दौरान like halfway through or at some point, I think if I'm not wrong, it was around Independence Day के आसपास. Yes. Towards the end or more than halfway through the games, where the flag hoist usually क्या होता है जब एक टीम का कंटिजेंट एथलीट्स विलेज पे ओलंपिक विलेज में पहुंचता है, तो वहां पे एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होता है कि हम पहुंच गए, हमारी टीम आ गई है, तो वहां पे इंडिया का झंडा ऊपर जाता है. राइट 2018 में जब हमारी टीम पहुंची थी, शिवा केशवन एंड फ्यू अदर एथलीट्स वर देयर, तो उस टाइम हम ओलंपिक झंडे के अंडर कम्पीट कर रहे थे. तो इट टुक like over the course of that event, finally the flag was hoisted and India was led back into the fold. Now the IOA uses this very conveniently to fight, as a tool to fight against the government whenever there is something that they want done that the government doesn't necessarily want to do. कि देखो हमारा कैसा नाक कट जाएगा, हम ओलंपिक्स में जाएंगे, वहां पे हम अपना झंडा नहीं लहरा पाएंगे, तो हवा मच जाता है, मीडिया में कहानी बन जाती है कि ये देखो इंडिया को डिरेकग्नाइज कर दिया है. Whenever somebody points out the mistake within the federations and within the IOA and anywhere,
I am not blaming anyone. I am not saying Mr. Batra is responsible or Mr. Rajiv Mehta is responsible or whosoever. I am not talking into that. Whenever there is somebody try to point out the mistakes and court or anybody takes notice of it or the government takes notice of it, then all the federations like मतलब एक साथ जैसे कि कोरस गाना होता है ना जैसे ऐसे बोल अरे आईओसी बहुत गुस्सा हो जाएगा IOC will derecognize us they don't want outside तो क्या होता है जैसे 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 अगर हम AIFF जैसे हम अगर AIFF का एग्जांपल ले इसमें थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग बैक टू फुटबॉल AIFF चिट्ठी लिखेगा फीफा को बोलेगा कि मेरी सरकार मेरी जो केंद्र सरकार है वो मेरे फंक्शनिंग में इंटरफियरेंस कर रही है समहाउ दखल अंदाजी ठीक है नहीं सर मैं प्रैक्टिकली कर देता हूँ ना अभी अंडर 16 AFC चैंपियनशिप है राइट सितंबर में होने वाला है हमारे लड़के क्वालिफाई करके गए जनाब ये नहीं कि वो बैकडोर एंट्री वाला सीन है यहाँ पे ये लड़के मतलब मजबूत टीम है सॉलिड टीम है अब जो ये ऑर्डर पास हुआ है इसका इस पे कुछ होगा इफेक्ट कि नहीं होगा इफेक्ट यही होगा कि यू विल नॉट गेट गवर्नमेंट मनी फॉर इट यू मे गेट इट लेटर बट यू विल गेट इट रीइंबर्स्ड या खर्च दो बाद में इनवॉइस भेज देना वो तो इन एनी केस आई थिंक वैसे ही होता है रीइंबर्स जस्ट बिकॉज आपके बजट में एलोकेशन है डजंट मीन आपको पैसे एडवांस मिलते हैं वो तो खर्चे के बाद ही मिलते हैं जब आप बिल जमा करते हैं नहीं लेकिन उसमें तो आपका इन राइटिंग होता है सब कुछ यहाँ पर नॉट राइट ये है जैसे कि आप बोल रहे हो कि फीफा को लिखेगा कि हमारा इधर ये हो रहा है तो फीफा तो सीधे सीधे बोल सकता है कि अरे आप तो हमारे मेंबर हो इवन इफ यू आर डिसरिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट व्हाट इज योर प्रॉब्लम क्या फर्क पड़ता है आप क्यों कितना नहीं बट होता क्या है कि AIFF लिखती है चिट्ठी फीफा को फॉर एग्जांपल ठीक है फिर फीफा लिखेगी चिट्ठी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फीफा के जो भी प्रेसिडेंट साहब होंगे उस टाइम पे जैसे IOC के प्रेसिडेंट साहब हैं जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते रहते हैं आपस में इनका चलता रहता है saying that as per our constitution as per FIFA's charter because these bodies also like to be supranational bodies that are above the laws of the countries in which they function so FIFA will write a letter to the sports ministry saying honorable sports minister this has been brought to our attention and if this continues to happen then India's teams will be disqualified from participating or some such threat but in this case it is difficult because this order FIFA also understands this order has not come from the government this has come from by the direction of the court of law and FIFA is very very respectful to law of the land of every country so they don't get into the if this so respectful in fact that when they host a World Cup FIFA has their own courts in that country. No, that is true. But if it happens by the Indian law, if it comes from the Indian court, FIFA will think thrice before interfering. सर एक ऑर्डर मैं भी पास करना चाहता हूँ कि अगर वैभव ने अगर बात नहीं करी शो पर तो वो डी-रिकॉग्नाइज हो जाएंगे आप तो बताइए नहीं तो आपको डी-रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा जल्दी से सर हम तो डी-रिकॉग्नाइज्ड ही हैं हम ऑलमोस्ट सेपाक टैक्रो फेडरेशन के तरह हैं but they will be very upset with your comment जबरदस्त खेल बड़ा जबरदस्त है उधर और एशियन गेम्स मेडलिस्ट भी हैं हम उसमें हाँ वही और क्या medalist भी है हम उसमें so it's true like Mr. Batra and IOA is not the focus of our show like Jaideep sir said and this is actually like the bone of contention for a huge number of PILs that Mr. Mehra has filed over the years over a decade almost which is कि the functioning of these sports federations जिस तरीके से होता है वो IOA ऐसे डिसाइड करता है कि अच्छा ये स्पोर्ट्स फेडरेशन हमारे साइड पे नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा दखलंदाजी करते हैं और किसी तरह से इन्हें अपने अंदर ले लेते हैं but AIFF has so far always been neutral so to say has distanced themselves from this and perhaps like the fact that they also get a huge amount of sponsorship money from FSDL helps them in making this decision or whatever it is like there may be 10 other reasons so as far as I can say like I don't think this is going to make a difference to any federation and AIFF definitely not so this is also a thing like globally अगर हम देखें पंडित तो जो because football as a sport is probably bigger than
the rest of the Olympics के सारे disciplines मिला के फुटबॉल एक तरफ ना, तो जब ब्राजील का टीम जैसे जाता है ओलंपिक गेम्स के लिए, तो that team doesn't necessarily kind of follow the diktats of the Brazilian Olympic Federation or Association. It is still very much a CBF team. और इंग्लैंड का या ग्रेट ब्रिटेन का स्क्वाड जाता है तो वो शायद अपने प्राइवेट जेट में जाएगा जबकि बाकी टीम अलग कमर्शियली जा रही होगी, यू नो ये सब तो एंड इनफैक्ट वो सेम फिकी का जो समिट था जिसमें डॉक्टर बत्रा वाज आल्सो देयर, जिसमें वो कह रहे थे इनफैक्ट कि एंड ही टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट एंड फुटबॉल which in his opinion took away all of the sponsorship money in the field of sport. So among all of these, cricket it's not their fault. I mean, no, it's not their fault. It's the popularity of the sport and it's inherent in that. Yeah. So AIFF is the least probably concerned because of the potential to earn revenue on their own and have and also the fact that उनका professional leagues भी चल रहे हैं. Men के लिए भी, women के लिए भी, and they have a very good like organized structure of like grassroots football in this country, so that's why AIFF is least concerned about like any diktats coming because they really know how to work the game in this country, you know. See, I will round it up like this. Should I hold a board up? I will round it up like this as what Arjun was asking, that in this entire episode AIFF is once again the loser. In IOA politics, AIFF has always become the loser. Without like जैसे 2 साल पहले 2018, the team did not go to the Asian Games. Yeah. The Indian team was not allowed to go to the Asian Games. And the reason given was that you're not a medal contender. Reason given was that, right? Even there were several others who were not medal contenders. The reason was a particular official in the IOA who said it in private and almost openly that मैं देख लूंगा कैसे फुटबॉल की टीम जाए. One particular official. तो पर ये तो वो हो गया ना कि मतलब आप अपनी फेडरेशन हो, you got yourself riches from possibly one of the biggest people in the world as far as corporates are concerned. तो मैं यहाँ बैठ के मैं थोड़ा jealous हो रहा हूँ. वही है which because football is not involved in IOA politics. Yeah, that was the main. So once again here AIFF is the loser for a change for no fault of them. I again say for a change. तो भाई तो इसमें दो पार्टीज हैं, ठीक है. We cannot conflate the Indian Olympic Association and the Ministry of Youth Affairs and Sports. They are two different people. Organizations. Right. Two different organizations, and one is a non-governmental organization, the other is a union ministry, right? The money comes from the union budget through Sports Authority of India, through Khelo India, etc., right? So and as far to the best of my knowledge, Jaideep, you can comment on this. The All India Football Federation has a very good working relationship with the Sports Authority of India. Yes, certainly. With Ministry, with Sports Authority of India, with everybody. So this derecognition as an NSF is an IOA thing. Yeah. Right? Essentially, IOA becomes the middleman in this situation between the NSF on the one hand and the funding body, which is the government on the other hand. Yes. अब या तो IOA का इतना phenomenal scene हो कि IOA खुद millions of dollars revenue में ला रहा हो और देन दे रहा हो पैसे, फिर अलग सीन है. लेकिन अगर आपके पैसे मिनिस्ट्री से आ रहे हैं, साए से आ रहे हैं, तो आपको आईओए से क्या लेना देना है? ओलंपिक्स में तो नहीं जाने वाली है ना इंडिया की कोई भी टीम. इसमें तो गलती तो मिनिस्ट्री का है. मिनिस्ट्री शुड हैव read the January. ये तो सिंपल वो क्लरिकल सिचुएशन है यार, कि जिसने वो पास किया कि डेडलाइन डेट आ रहा होगा कि इस डेट पे सारे पूरा लिस्ट है, ऑल दीज फेडरेशंस विल गेट डीरेकग्नाइज्ड. तो वो बाबू ने चिट्ठी लिख दिया मार्क टू एवरीबॉडी सेइंग अरे इस टाइम पे हम और कुछ नहीं कर सकते, तो फॉर द टाइम बीइंग वी विल एक्सटेंड द स्टेटस को
for No, another I 6 months. Right? अब I वो think what उस टाइम वो बाबूजी ने पढ़ा नहीं कि कोर्ट ने बोला हुआ है कि पहले हमसे भाई, परमिशन सब लीजिए. परसेप्शन वाले लोग हो यहाँ पे बाबू बना दिए सब सरकारी लोगों को हैं. court actually said कि please inform. Inform, Please yeah. inform. वही Inform है. is एक on चिट्ठी the भेज देना था in बस. the please inform us means in the open court. हाँ ठीक तो वही ना. What they did was filed an affidavit, which never reached the court. Yes. तो कोर्ट says भाई कहाँ से आ गए ये आप तो ये तो और कंटेम्प्ट है आप ये कैसे हैं? it's not something the court would have also picked up on its own. Correct me if I'm wrong. But the court also probably would not have picked this up on its own unless No, it a did. petitioner had gone to the court and said कि भाई ये Yes, sir. आपका order ये Exactly. है और ये आपका और ये order ऐसे violate हुआ है. violate हुआ है वो तो हुआ ही है. By the way, जाते जाते just perfect feedback. One guy gave perfect feedback on YouTube saying, "Man, you guys have reached Alvaro Morata levels of inconsistencies." मैंने कहा ठीक है भाई, ये अलग ही था. मतलब इतने सारे आर्सेनल फैंस बैठे हुए हैं. He needed Alvaro Morata to pick on find for inconsistency. यार अल्वारो मोराटा गोल तो मारता है, आर्सेनल वाले तो गोल भी नहीं मारते हैं. आपको ऐसा There is a consistency in mediocrity. Okay, fine. ये ठीक. I think that was the best. माफ कीजिए मैं जा रहा हूँ भाई. बाय. Thank you guys. Bye.